Hello friends, today I will show you my small kitchen garden which I made it beside my quarter. And this is the large cardamom plant, this is the sugarcane plant, these are the tomato plants. This is what we call amuli in our leaves, in our dialect. इसे आप डायरेक्ट कच्चा भी खा सकते हैं. देखिए ये इसे खाने से हमारा पेट का जितना गैस वेस का प्रॉब्लम है वो सब सॉल्व हो जाता है. तो देखिए हम इसे डायरेक्ट खा सकते हैं, इसमें कोई वो प्रॉब्लम नहीं है. तो आज हम आप लोगों को दिखाएंगे कि हम किस तरह से अपने जो लार्ज कार्डमम प्लांट है उससे कार्डमम हार्वेस्ट करते हैं. तो आपको बता दूं कि कार्डमम प्लांट्स जो है यूजुअली हिली एरियाज जहाँ पे मौसम ठंडा हो वहाँ पे कल्टीवेट किया जाता है. तो अरुणाचल में बहुत सारा जगह में हम लोग का ये कार्डमम का प्लांटेशन होता है. तो उसी को देखते हुए हमने भी अपना गार्डन में कार्डमम प्लांट लगाया था. तो बेसिकली अगर आप इसका जो पहले ट्री प्लांट है वहाँ से अगर निकाल करके प्लांट करते हैं तो इसका जेस्टेशन पीरियड 2 इयर्स का है. और अगर आप नया डायरेक्ट नर्सरी से ले करके प्लांट करते हैं तो इसका जेस्टेशन पीरियड जितना तक मुझे पता है उसका जेस्टेशन पीरियड 3 इयर्स है. तो इलायची निकालने के लिए हम बेसिकली इस तरह का टूल यूज़ करते हैं, इसे हिंदी में बटाली कहते हैं. तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि इलायची किस तरह हम हार्वेस्ट करते हैं. चलिए देखिए ये है हमारा इलायची का ये जो फ्रूट्स है. देखिए हम किस तरह से इसे करते हैं. देखिए कोई कोई कच्चा है मगर जब ये पक जाता है तो ये इट बिकम्स फुल्ली रेड इन कलर. कार्डमम्स आर बेसिकली नोन फॉर इट्स रिच अरोमा. और ये जो कार्डमम हम देख रहे हैं दिस आर नॉर्मली डिफरेंट फ्रॉम द वंस वी गेट इन मार्केट. जो छोटा छोटा ग्रीन कलर का होता है ये रेड कलर का है. देखिए जितना तोड़ते हैं हम वहाँ साइड कर देते हैं. देखिए एक्चुअली क्या है जब हम इसे साफ़ करते हैं तो इसका जो नीचे जड़ से हम इसे उखाड़ लेते हैं ताकि ये नेक्स्ट ईयर इसे और फ्लावरिंग होने में मदद मिले. तो देखिए इस तरह से. तो ये है देखिए दिस ईयर इट हैज़ रेन इन एक्सेस देयरफॉर all I can expect is somewhere around 2 kg from my this small garden. शायद से 2 kg से भी कम निकले बट होप करते हैं. देखिए देखिए कितना कितना रेड इन कलर है ये. देखिए ये है दिस. वाओ इट स्मेल. वाओ वाओ. देखिए इस तरह से हम निकालते हैं. देखिए देखिए वेरी सिंपल. बस देखिए आप जिस तरह से इसे साफ़ करते जाएंगे उतना ही ये अगला साल आपको और प्रोडक्ट्स देगा. ये तो ड्यू टू एक्सेस ऑफ रेन इट हैज़ गॉट रोटन. यू सी just you have to remove it like this. अगर आप इसे लार्ज स्केल में कल्टीवेट करते हैं तो इट्स वेरी गुड. इट्स वेरी एक्सपेंसिव एंड इन मार्केट इट्स सोल्ड अराउंड 300 to 400 per kg. What I usually do is after plucking all this large cardamom I wash it in water so that it looks clean and then I dry it in the fire. As I don't have a machinery dryer or other mechanism to dry this. हमने दूसरों को देखते हुए ये काम करना सीखा है. तो देखिए अब मेरे लिए तकलीफ ये है कि बीच बीच का जो अंदर अंदर है उसे कैसे निकाला जाए विदाउट एनी ट्रेनिंग, विदाउट एनी नॉलेज अबाउट दिस. लेकिन अभी तक जितना निकाला मैंने देखिए अभी तक जितना निकाल पा रहा हूँ सही तरह से निकल रहा है. यहाँ अपना ये जो कार्डमम को हर्ट नहीं कर रहा हूँ. आई एम एबल टू get these beautiful fruits nicely. This is just a very small scale gardening. ये जो किचन गार्डन है
People here usually use it as a cash crop. They sell it in the market, but here I won't sell it. I will use it for my personal purpose. आप लोगों को बता दूं कि इलायची का जो चाय होता है बहुत टेस्टी होता है. You see, this is the new one coming out. तो यही सब के लिए we have to clean up the mesh. देखिए जितना गंदा है ये सब एक्स्ट्रा से इसे हमें साफ करना पड़ता है. तो this I will be able to clean it better once I remove this part. You see, accidentally I have poked this, and now all the seeds has come out. You see, you can see it's jelly inside. I'm clearing this all up because clearing this will help the new ones to grow easily when they come up. These are the new buds which are coming out. You can see these red ones. Here, everywhere you can see this. If I'm removing all these old ones, it helps them to grow. It helps them to come out very nicely. But sometimes what happens is, like, while trying to remove all these weeds, we sometimes end up chopping those new ones. So we have to do it with very carefully. You can see here one is coming out. You can see I'm trying my level best to avoid it getting chopped. Pe honje po choi chibu tu shela da wa chunu. Cha pe tu shela wa na pe te ne tu na cho. Good. Chalo Maggie chibu cho. See, I have completed this one full plant. These are the flowers. And this is the harvest from this single plant, you see. Wow, I'm very much happy to get this much from a single plant. These small leaves you're seeing, these are the weeds. Actually these are also ilaichis only. The tender leaves you're seeing, this. But this we call it as infected here. People say once this kind of leaf starts coming from the cardamom plant, it doesn't fruit anymore. Therefore it has to be removed, or the whole plant has to be uprooted. You see from where all these new plants are coming. This is what we say infect ho jana. You see पूरी तरह से infect हो रहा है. देखिए कितना they are coming out in large numbers. देखिए, you see from each and every part it's coming out. This has to be removed. अगर आप इसे नहीं निकालते हैं तो अगला साल ये इलायची नहीं खिलेगा इसमें. I mean नहीं फलेगा, तो इसे निकालना ही पड़ता है. देखिए किस तरह से ये इन्फेक्ट करता है. ये देखिए, these are the places from where the fruit should come out, but ये जो plants निकाल करके इन्फेक्ट कर दिया मेरा इलायची को. By seeing this, it has to be uprooted. This plant has to be uprooted and thrown off now. ये भी इन्फेक्ट हो चुका है, तो इसका भी इन्फेक्टेड पार्ट को इस तरह से निकाला जाएगा. You see, once the plant gets infected, it doesn't bear any fruit. You can see all this. It flowers, but it doesn't bear any fruit. Very rarely you get
some 4 to 5 pieces of fruits. You can see all this. Therefore I have removed all the plant. These are the flowers which bears fruit, but you see it doesn't bear any fruit. It didn't bear. Very rarely, very few I may get. Here you can see some fruits, but not that healthy. You see, they are not even ripened also. Very small in size. Therefore, better is to take them off. And if you have new plants, plant them. You see, nothing is there. You see, only these small unripened flowers. And this is the main weed which infects our plants. You see, they are unusual. Usually cardamom's leaf is, you can see all those, they are long in size, but you can see this, they are almost round in shape and very short, very dwarf, I would say. So instead of laboring on these infected plants, I shall throw it off, and I will plant new plants during the season. Usually they are like large cardamom in this side of the country is planted during the month from February to August. This is what all I got from 3 infected plants. मेरा सैटरडे संडे का छुट्टी अच्छी तरह कट गया. For drying you need lots and lots of this kind of sunny days, or else you need lots of firewood, like here I have kept to dry it. You see, this is how I dry my large cardamom using fire. You can see the smoke coming of the chulha. You can see these elaichis are now crispy. They are almost dried, but I still need to dry them for 3 or 4 more hours because some of them are yet to dry. You can see this jelly liquid thing coming out from them, which shows that they are not yet dried. You see, they are red in color and it's sticky in nature. You can see, as you can see, it's sticky in nature. So this has to be kept up in the fire for maybe 2 or 3 more hours so that it dries properly. And I will show you, this is the fully dried large cardamom. You see, after it's fully dried, the seeds can be seen very clearly. This is the tongue which I usually use to spread it and mix it. The best thing about this large cardamom is its scents become more strong when it's fully dried. So I hope you have enjoyed seeing my video. So if you liked my video of how to harvest the cardamom, especially large cardamom, and what are its drying procedure or drying techniques, drying methods, then please do like, share and subscribe to my channel so that I can bring you more such informative videos, also more such entertaining videos. Now my whole elaichi has dried fully. Oh, I love this smell. Wow.